तो हम लोग बात कर रहे थे सेंटेंसिंग पर हम लोग बात कर रहे थे एंड in the last two classes that we had, we looked into the problem of a structured sentencing that has been experienced and felt in India, and what options are available as far as sentencing is concerned. I also told you that there are two models that you would find in different jurisdictions. One is where the higher courts would be formulating sentencing guidelines, and those sentencing guidelines would be followed by the trial courts at all levels. And the other model is where a statutory body would be constituted. We had seen in the last class the example of England and Wales, where sentencing council is in existence since April 2010, and this sentencing council, a statutory body, would be formulating guidelines that would be ordinarily followed unless doing so would be against the interest of justice in particular individual cases. In India as well, if you look at the earlier reports, and in the last class I had mentioned one that we call the Madhav Menon Committee report, another that is known as the Malimat Committee report. Malimat Committee report is of 2003, Madhav Menon Committee report is of 2007, and incidentally, Professor Madhav Menon, late Professor Madhav Menon, was part of both the committees. In Malimat Committee, he was a member. Madhav Menon Committee, he was the chairperson of that committee. And there is a great deal of overlapping in the two reports. And in both the reports, you would find that lack of coherent sentencing policy in India has been highlighted, and certain suggestions have been made. I had also told you that much of the debate that you have on sentencing in India, जो वाद विवाद और संवाद है भारतवर्ष में सेंटेंसिंग को लेकर के, उस वाद विवाद और संवाद में केंद्र में जो मुद्दा है वो मृत्युदंड का मुद्दा है, डेथ पेनल्टी का मुद्दा है. अब डेथ पेनल्टी का जो मुद्दा है उसको किस प्रकार से देखना चाहिए. आपका जो टॉपिक है आज का और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पनिशमेंट. तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पनिशमेंट तो मुझे लगता है कि बहुत एक ड्राई, एक बहुत रूखा सूखा एक विषय होगा अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पर चर्चा की जाए, और उस कॉन्सेप्ट को समझना मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है. लेकिन डेथ पेनल्टी को लेकर के हो क्या रहा है विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, और भारतवर्ष में किस प्रकार से फिर दो विचारधाराएं डेथ पेनल्टी को लेकर के अपने अपने मंतव्य जो है वो सामने रख रही हैं, और क्या आप किसी एक विचारधारा से अधिक सहमत प्रतीत होते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे. Death penalty has been there in IPC right from 1860. 1860 से ही IPC में मृत्युदंड की व्यवस्था रही है, और 1860 के पूर्व भी जिस प्रकार की भी विधियां भारतवर्ष में प्रचलित रहीं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हों या अन्य
आधारों पर हों, आप पाएंगे कि मृत्यु दंड के एक प्रकार के रूप में, एक स्वरूप के रूप में भारतवर्ष में प्रचलित रहा है। बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अपराध ऐसे रहे हैं जिन अपराधों के लिए एकमात्र दंड जो है वो मृत्यु दंड का प्रावधान ही उन विधियों में, चाहे वो जिसको हम हिंदू विधि कहते हैं, चाहे वो इस्लामिक विधि कहते हैं, विभिन्न कालखंडों में ये विधियां प्रचलित रही हैं। और आप पाएंगे, यदि आप लीगल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि मृत्युदंड, कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था रही है। मृत्युदंड की यह व्यवस्था 1860 में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा आपसे, 1860 में जब आईपीसी बनी, जिसको हम निश्चित तौर पर 160 वर्ष पुराना कानून होने के बावजूद कह सकते हैं कि वह एक आधुनिक दंड विधि का उदाहरण है। तो मैकॉले और उनके साथियों ने कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था आईपीसी में भी की। आप पिछले 160 वर्षों की आईपीसी की यात्रा यदि देखें तो आप पाएंगे कि आईपीसी में कम से कम 76-77, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, शायद आखिरी जो संशोधन हुआ था वो 76वां या 77वां संशोधन था, वो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन 2018 में जो संशोधन हुआ आईपीसी में, उसने ऐसे अपराध या ऐसे दंड जोड़े जिनसे ऐसे प्रावधानों की संख्या केवल बढ़ी है जिनके अंतर्गत अपराधी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। द नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस हैज ओनली इंक्रीज्ड इन these years where death penalty has been prescribed by the legislature. तो यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि सारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तुरंत दे सकने की स्थिति में होंगे कि वर्तमान में आईपीसी में कितने अपराधों के लिए या कितने प्रावधानों के अंतर्गत, संख्या केवल यदि हमको बतानी हो, कितने अपराधों के लिए और कितने प्रावधानों में मृत्युदंड की, यदि यह प्रश्न मैं आपसे पूछूं कितने अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था है, तो क्या आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? केवल आपको नंबर बताना है। और यदि आप कुछ अधिक बताना चाहते हैं तो आपको यह बताना होगा कि नवीनतम प्रावधान जिनके अंतर्गत मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है वह प्रावधान कौन से हैं? Would somebody like to answer this question, that how many offenses under IPC attract death penalty today when we are talking about the concept of death penalty, the punishment of death, the sentence of death? Any answer to this question? How many? Six. All right. Six. How many? 6. Okay. Mona said 6. Any other? It's not about your view, of course. I'm not looking for any views that whether you agree with the punishment of death penalty or do you think that death penalty is barbaric and unconstitutional, despite there being, of course, emphatic rulings by the Supreme Court that declare death penalty to be a constitutional prescription by the sort of, or a punishment which has nothing unconstitutional in it. तो मोना ने बताया 6. Okay. Any other? Any other?
सर कम से कम हमें लगता है कि 12 या 14 12 या ऑफेंसेस होंगे you are almost near to that. जिनमें डेथ पेनल्टी दी जा रही है Great, इस समय great, आईपीसी के अंतर्गत। great, great. देखिए 2013 तक और 2013 में मुझे लगता है कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ आईपीसी में। पनिशमेंट में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ। सेंटेंसिंग की जो व्यवस्था रही है उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुए 2013 में इन द आफ्टरमाथ ऑफ निर्भया गैंग रेप, एंड दैट ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। So death sentence, that is also called capital punishment, may be awarded in 13 cases. 12 और 14 का एवरेज अगर निकाला जाएगा, जो जवाब दिया गया था अभी लास्ट वन, तो निश्चित तौर पर वो जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। 13 cases. Let me mention all the 13 cases for your benefit. The first one, the waging war against the government of India, section 121. Abetting mutiny when it is actually committed, section 132. Giving or fabricating false evidence whereby an innocent person suffers death, that is section 194. Threatening any person to give false evidence resulting in conviction and death of an innocent person, section 195 capital A. Section 195 capital A was not part of your original scheme of IPC. You are aware that it was added only in 21st century. Murder, of course, section 302. You also know that till 1983, you also had section 303. Death penalty in those cases where a person is serving his life term, commits murder, mandatory death penalty was there in section 303. I'm not including that mandatory death penalty of section 303 in this number of 13 offenses, because that was declared to be unconstitutional way back in Mithu versus State of Punjab in 1983. You are aware of that. In fact, Mithu versus State of Punjab is taught in the constitutional law classes as far as Article 14 and Article 19 are concerned. Reasonable classification, equality before law, equal protection of law. Mithu is an important decision. Then you have this death penalty or capital punishment for the offense of abetment of suicide of a minor, insane or intoxicated person under section 305 of IPC. Then even for attempt to murder by life convicts if hurt is caused under section 307 of IPC. And another late entrant in the scheme of death penalty in IPC is section 364 capital A, kidnapping for ransom. Kidnapping for ransom, section 364 capital A. And then from 2013, the number of offenses or the number of provisions that attract death penalty has only increased. In 2013, section 376 capital A was inserted in the scheme of offenses of sexual assault, and section 376 capital A provided for death penalty for rape causing death or resulting in persistent vegetative state, PVS. Death has not been caused, but the sexual assault has reduced the survivor, the victim,
into what we call a persistent vegetative state, PVS. Death penalty is prescribed for that. Then in 2018, again, a new provision providing for death penalty was inserted. That is section 376, capital A, capital B, AB. 376 AB, punishment for rape on a woman under 12 years of age. Section 376 DB, punishment for gang rape on a woman under 12 years of age. And section 376 capital E, one of the most controversial provisions that was inserted way back in 2013 itself, where a second or subsequent offense punished under any of these sections. Which sections? 376, 376 capital A, 376 capital A, capital B, AB, section 376D, that is gang rape, section 376DA, that is again gang rape of a girl under 16 years of age, or section 376DB, gang rape of a girl under the age of 12 years, would attract death penalty. And finally, you have section 396 of IPC, which was there even before these new provisions attracting death penalty were inserted. Section 396 is dacoity with murder. But then if you ask me, I asked you this question, if you ask me a counter question, that sir, are there other provisions in other special or local legislation attracting death penalty, and how many? I may not be able to answer that question accurately, but I can give you examples of death penalty in other special and local legislation. Even POCSO now, Protection of Children from Sexual Offences Act of 2012, POCSO Act. POCSO Act now carries death penalty. Amendments that were necessitated because there was some kind of incongruity between IPC provisions pertaining to sexual assault on women and the POCSO provision, and that led to amendment in the POCSO Act in 2019, and now you have death penalty in certain cases of sexual assault on children under the age of 18 years. The NDPS Act makes a very curious sort of case as far as death penalty is concerned. NDPS Act has death penalty. Arms Act has death penalty. Arms Act, you refer to section 27 clause 3 of the Arms Act, and I must talk about section 27 clause 3 of the Arms Act before I proceed to discuss other aspects of death penalty in India. I told you that mandatory death penalty was frowned upon by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को सेक्शन 303 आईपीसी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि एक ऐसा कन्विक्ट जो पूर्व से ही लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा प्राप्त है और जब वो ऐसी सजा के अधीन है और वो फिर हत्या करता है तो उसको अनिवार्य रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा क्लासिफिकेशन जो है वो संवैधानिक वर्गीकरण की जो सीमाएं हैं उनके विरुद्ध जाता है एंड डिक्लेयर्ड सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या धारा 303 आईपीसी ही एकमात्र ऐसा प्रावधान था? यदि आप समग्रता में
भारतीय दंड विधियों को देखें जिसमें अनिवार्य मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी की व्यवस्था की गई थी, आप पाएंगे कि 1983 के बहुत बाद तक बहुत सारी अन्य संविधियों में, स्पेशल एंड लोकल लेजिस्लेशन, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी वाज देयर and those provisions continue to be on the statute book unabated. Let me give you an example, very interesting example of this. Section 27 clause 3 of Arms Act of 1959, जिसको आयुध अधिनियम कहते हैं, आयुध अधिनियम. Arms Act of 1959 contained mandatory death penalty for certain offenses, and survived even that onslaught on mandatory death penalty that was accepted by the Supreme Court in 1983. And it was only in 2012, आप पढ़िएगा, a division bench decision in state of Punjab versus Dalbir Singh, state of Punjab बनाम दलबीर सिंह के मामले में धारा 27 उपधारा 3 आर्म्स एक्ट 1959 की वैधानिकता को, संवैधानिकता को फिर से चुनौती दी गई, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस डिवीजन बेंच ने धारा 27 उपधारा 3 आर्म्स एक्ट 1959 को असंवैधानिक घोषित कर दिया. एंड द सेम ग्राउंड्स which the Supreme Court had earlier taken in Mithu versus state of Punjab. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से फॉर रिपीट ऑफेंडर्स एनडीपीएस एक्ट also had a provision, if I recall that correctly, it was section 31 capital A, which provided for mandatory death penalty for repeat drug peddlers, for repeat offenders, those who have already been convicted for a serious offense. Under all offenses are serious. NDPS Act is a very draconian legislation, you are aware, and NDPS Act was in news for all the wrong reasons. Recently, in the past 2 years, there has been a renewed interest of everyone as far as NDPS Act is concerned, and for a student of criminal law, by any standard, it's something that must be agreed to, that NDPS Act is a draconian, is a very stringent, बहुत ही कठोर जिसको हम कहते हैं कानून. एक फीचर ये भी था. Section 31 capital A had the mandatory death penalty for repeat offenders, and it was Bombay High Court in a certain case, where Bombay High Court said that though it's prerogative of the legislature to prescribe punishment and to decide what is an appropriate punishment. कल भी मैंने आपको बताया, पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब करना ये जुडिशरी का काम नहीं है. पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब करना, व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट, व्हाट शुड बी द मिनिमम लिमिट, certainly this sole prerogative, this domain belongs exclusively to the legislature, to the parliament, and the courts don't meddle in this affair. But certainly, being a country which is run on constitutional principles, it's also the duty of the courts to see that the punishments don't fall foul of the constitutional guarantees. And those constitutional guarantees include the right to equality and fairness in the decisions
including the executive and legislative decisions. But it seems that the legislature and the executive, of course, the decision is initially taken by the executive, and then it's the executive that moves. You know the parliamentary procedure of making and unmaking and amending laws, including provisions providing for death penalty and all. That it's a decision that is taken first by the executive, and in order to implement that decision, bill is introduced, debate कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है, and this is how laws change or new provisions are inserted. तो आप पिछले 15-16 सालों में अगर आप जो डेवलपमेंट है उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ा मिक्स का ट्रेंड है, एंड इट सीम्स दैट द government is obsessed with death penalty and views death penalty as a remedy for all the situations, especially where public opinion or the public outcry calls for stringent punishment. तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के रूप में उन्होंने कहा कि हम डेथ पेनल्टी जो है वो इस अपराध के लिए प्रेस्क्राइब कर दे रहे हैं. बट लेट मी टेल यू दैट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डेथ पेनल्टी हैज इट्स ओन लिमिटेशन. फ्यूटिलिटी डेथ पेनल्टी की क्या है, एंड वेदर डेथ पेनल्टी एक्चुअली एक्ट्स एज अ डेटरेंट. Is there evidence to suggest that death penalty is in fact a deterrent punishment? डेथ पेनल्टी का और कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता ना. डेटरेंस के अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? दूसरे जो पनिशमेंट्स हैं शॉर्ट ऑफ डेथ पेनल्टी, उनके ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनके अन्य उद्देश्य हो सकते हैं. डेथ पेनल्टी का तो एकमात्र उद्देश्य है डेटरेंट. डेथ पेनल्टी का एक और उद्देश्य वेंजेंस. हालांकि वेंजेंस कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि राज्य जो है वो एक व्यक्ति से बदला ले रहा है. वेंजेंस मतलब बदला लेना. आपने जो किया है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा. हाँ, करना होगा. राज्य व्यक्ति से बदला ले रहा है, वेंजेंस. तो वो कहते हैं कि डेटरेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी. डेटरेंस. बट वेदर डेथ पेनल्टी इन फैक्ट डेटर्स, डेटा that you have post Nirbhaya, data that you have post 2013 amendments, data that you have post 2018 amendments, data that you have at the global level, data that you have from those jurisdictions that have either abolished death penalty or have imposed a moratorium on death penalty. Should be studied in order to formulate an opinion. But unfortunately, death penalty discussion and debate in this country and elsewhere as well is often mired in what we call emotional outburst. It's true that death is an emotional issue. चाहे वो होमिसाइड हो, चाहे वो जिसको हम कहते हैं जो है वो डेथ पेनल्टी हो इम्पोज्ड बाय द स्टेट दैट यू कॉल लॉफुल होमिसाइड. आपको ध्यान होगा जब आप एलएलबी में आपने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ना शुरू किया होगा, सेक्शन 299 300, तो शायद आपको ये बताया गया हो या किसी टेक्स्ट में आपने पढ़ा हो, स्पेशली टेक्स्ट फ्रॉम इंडियन ऑथर्स, कि होमिसाइड दो प्रकार का होता है, एक लॉफुल होमिसाइड, एक अनलॉफुल होमिसाइड. तो लॉफुल होमिसाइड में
बताते हैं कि how the homicide such as execution of death penalty is a lawful homicide, or killings during war is a lawful homicide, and unlawful where it's prohibited and punished by law. So death penalty, I would like you, towards the end of this class, I would like you to view death penalty not as an emotive issue, but as a legal issue, as a moral issue, and in the light of not, if not social morality, at least in the light of a constitutional morality. This is what my idea of discussing this topic with you is. So let me repeat that in addition to IPC offences, which I enumerated, listed before you, such as murder and rape in certain cases, crimes punishable with death term in India fall under the POCSO Act, even the SC/ST Act of 1989, UAPA Act of 1967, NDPS Act of 1985, MACOCA of 1999. MACOCA is the state legislation. It's the local legislation, both special and local, passed by the Maharashtra legislature. And in India, even today, the public opinion seems to be overwhelmingly in favor of death penalty, especially in case of sexual assault and killing of women and children. And in recent years, and as it always was, the whole debate on sentencing and punishment, and this is again something which I'm only repeating, seems to be confined to the desirability of death sentence in Gandhi's country. And unfortunately, the public opinion seems to be overwhelmingly supporting retention of death penalty. So whether India should abolish death penalty as a punishment or should retain is an ongoing, unending debate. I must draw your attention to one of the rather early reports of the Indian Law Commission, the Law Commission of India, in its 35th report. 35th. Carefully considered all the collected material from other jurisdictions as well, and recorded their views regarding the deterrent effect of capital punishment. 31st report में क्या कह रहे हैं कि in our view capital punishment does act as a deterrent. और वो ये भी बता रहे हैं कि किन कारणों से उनका ये व्यू है, उनका ये ओपिनियन है कि डेथ पेनल्टी जो है वो डेटरेंट है. पहला कारण उन्होंने बताया, बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग ड्रेड्स डेथ. प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है प्रत्येक व्यक्ति को. दूसरा कारण उन्होंने बताया कि डेथ एज अ पेनल्टी स्टैंड्स ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or any other punishment. And here the difference is one of quality and not merely of degree. उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी एक अलग क्लास है. बिल्कुल सही है. When you look at the scheme of punishments in section 53, you find other than death penalty, there is life imprisonment, there is then imprisonment which may be of two kinds, rigorous and simple. When you look at this punishment of imprisonment,
including life imprisonment. You find that it's not about quality in the strict sense of the term. For the argument's sake, of course, it can be argued that even death penalty, even life imprisonment is different in quality from simple imprisonment because it's accompanied by hard labor and all. But certainly, the two punishments are class apart. So, Law Commission was correct when it said that the difference is one of quality, not merely of degree. तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ कमीशन जो है वो आमतौर पर कंसल्टेशन पेपर भी जारी करता है, तो उसने ये भी अंडरस्कोर किया और कहा है अपनी रिपोर्ट में that those who are specifically qualified to express an opinion on the subject on the question of retention of death penalty, including the majority of the functionaries of the state governments, judges, members of parliament, members of state legislatures, members of the bar, police officials, they are definitely of the view that deterrent object of capital punishment is achieved in a fair measure in India. और ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि deterrent object is achieved in a fair measure? By looking at the number of crimes after death penalty has been prescribed for a particular crime. If the number of crime has drastically decreased in, say, for example, 3 years time after its introduction or prescription, certainly it can be said that. But you look at the data year after year, crime in India report, 2013 के बाद से 2020 तक का crime in India report आपके पास available है, आप देखिए whether the number of rape and the other violent offenses against women have come down. They have only increased. Murder has come down to minimal extent. Murder, the number of cases under section 302. Murder कुछ कम हुए हैं निश्चित तौर, but I doubt that the number of murders have come down because death penalty तो उसके लिए पहले से थी. Death penalty तो murder के लिए मैंने बताया आपको 1860 से. ये तो 1860 से. तो ये कह रहे हैं अपनी 35वीं रिपोर्ट में बार काउंसिल, आई एम सॉरी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी अगेन, कि अल्टरनेटिव क्या है. तो अल्टरनेटिव तो पहले से है, अभी उस पर भी बात करेंगे हम लोग, एज फार एज अल्टरनेटिव टू डेथ पेनल्टी इज कंसर्न. बट दे हैव अंडरलाइंड that whether any other punishment can possess all the advantages of capital punishment is a matter of doubt. तो जब वो दूसरे jurisdictions के डेटा को देखते हैं, statistics and data, तो ये कह रहे हैं as a face saver that statistics of other countries are inconclusive on the subject. Statistics of other countries are inconclusive on the subject. और inconclusive कैसे हैं? If they are not regarded as proving the deterrent effect, neither can they be regarded as conclusively disproving it. Disproving. तो deterrent effect की चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि दूसरे jurisdictions के जो डेटा हैं वो conclusive नहीं है. I must draw your attention to something which we often discuss when we talk about the deterrent effect of death punishment. There was a time when in England, death penalty was prescribed even for simple offense of theft. And the offender would be hanged in public. तो अब कहीं पे अगर आज भी कहीं पे मान लीजिए यू जस्ट इमेजिन कि कहीं पर ये आपको पता चले कि किसी को फांसी होने वाली है पब्लिक प्लेस पे,
तो वहां पे तो भीड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी भीड़ जुट जाएगी। इंग्लैंड में भी जब पब्लिक हैंगिंग होती थी तो भीड़ जुट जाती थी और उस भीड़ में लोगों के जेब कट जाते थे। एक जेब कतरे को फांसी हो रही है, लोग देखने के लिए आए हैं, उस भीड़ में जेब कतरे भी। व्हाट डेटरेंट इफेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? कैन देयर बी अ बिगर example or better illustration to underline that death penalty as a deterrent punishment is a farce, is certainly not deterrent. जब भारत आजाद हुआ, और मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा, we continued with the substantive and procedural laws that were given to us by our colonial masters, IPC and CRPC. CRPC of 1898, CRPC 1898 की, आज की जो CRPC है 1973 की, वो उसका एक तरीके से आप समझिए कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि इट्स कंप्लीट रेप्लिका, but retains the essence, including the sequence in which provisions have been arranged. But when you look at the provision of earlier CRPC pertaining to the procedure for award of death penalty, it was provided that death penalty is a rule and life imprisonment an exception. Death penalty rule and life imprisonment exception. And it was mandated that the court awarding life imprisonment must assign special reasons for not choosing death penalty. In a case where death penalty has been prescribed by, it all changed in 1973, you know. It all changed. And not only it all changed, another very important constitutional milestone was achieved in 1978 when a 7 judges constitution bench of the Supreme Court in Menka Gandhi versus Union of India insisted on fairness in procedure. You know that Article 21 of the Constitution talks about procedure established by law, and before Menka Gandhi decision, right from A.K. Gopalan, that was interpreted to mean any procedure that has been prescribed by the competent legislature. Fairness in that procedure, the element of fairness in that procedure was considered to be alien. And that was in stark contrast to the requirement of American Constitution, where it has to be due process. So in India, it was procedure established by law. In America, it was due process. And procedure established by law was distinguished from due process till 1978, when in Menka Gandhi, the Supreme Court said that even if it's procedure established by law, it has to be a fair procedure. And that fair procedure or fairness in the procedure is what you call due process. So it was hoped that death penalty would not survive this ruling. Death penalty would not survive this ruling. And precisely for that reason, I believe, the constitutional validity of death penalty was challenged before a constitution bench. In Bachchan Singh versus State of Punjab in 1980, Bachchan Singh versus State of Punjab, AIR 1980, Supreme Court 8898.
The judges were Justice Chandrachud, the senior Chandrachud, who was then Chief Justice of India, Justice Bhagavati, Justice Sarkaria, Justice Gupta, Justice Untwalia. And by majority of 4:1, where Justice Bhagavati recorded his dissenting opinion. The Supreme Court in Bachan Singh versus State of Punjab declared death penalty to be constitutional. And a lot of issues have been. It's a very interesting decision, and this decision is also important because it tried to lay down sentencing guidelines in death penalty cases by formulating what we call the rarest of rare, the doctrine of rarest of rare. The majority judges who spoke through Justice Sarkaria, they acknowledged that the question whether or not death penalty serves any penological purpose is a difficult, complex, and intractable issue. That whether it serves any deterrent objective or the purpose of deterrence is served is a difficult, complex, and intractable issue. They also acknowledge that it has evoked strong divergent views, strong and divergent. I told you that the two equally strong views which are doing the rounds, the global level, at the domestic level, in India, elsewhere. Divergent, strong divergent views. So they came to this conclusion that death penalty does not fall foul of Article 19 or, for that matter, Article 21 of the Constitution. They refer to the 31st report of the Law Commission, even subsequent reports of the Law Commission suggesting retention of death. Every report, even the latest report of Law Commission, 262nd report of 2015, it recommended abolition of death penalty except in cases of terrorism or waging war against government. Terrorism, major. It said that abolish death penalty for all other cases, for all other offenses. Retain it for terrorist activities, for the offenses of terrorism. But more than reading and knowing, everyone knows what the majority judges said and how they came to this conclusion that there's nothing wrong constitutionally, and they rejected the challenge to the constitutionality of the provision contained in Section 302 of IPC and also Section 354(3) of CRPC of 1973, which required recording of special reasons. आपको लगता होगा अगर कभी कि ये rarest of rare जो है वो that is something which came out of blue. ये कहाँ से आ गया rarest of rare? ये कोई बहुत innovation है? नहीं, rarest of rare innovation नहीं है. Rarest of rare innovation इसलिए नहीं है because the 1973 CRPC provided for recording with special reasons for choosing death penalty over life imprisonment, and it made death penalty as an exception and life imprisonment as a rule. So when you have to choose life, when you have to choose death penalty, you have to assign special reasons.
वही स्पेशल रीजंस तो हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये केस है इसको जस्टिफाई करते हैं. जस्टिस भगवती हु रिकॉर्डेड हिज सोल डिसेंटिंग ओपिनियन, उन्होंने कहा कि let me make a few observations in regard to the barbarity and cruelty of death penalty. Barbarity and cruelty of death penalty. उन्होंने कहा कि constitutional validity of death penalty can't be appreciated in its proper perspective without an adequate understanding of the true nature of death penalty, which he believed that is barbaric and cruel. And what it involves in terms of human anguish and suffering. And he has very strong views as far as abolition of death penalty is concerned. पहली चीज जो उन्होंने कहा कि in the first place death penalty is irrevocable. It cannot be recalled. All other punishments can be recalled. एक बार death penalty हो गई, irrevocable. Irrevocable. It can't be recalled. It extinguishes the flame of life forever and is plainly destructive of the right to life, the most precious right of all. A right without which enjoyment of no other rights is possible. It silences forever a living being and dispatches him to that undiscovered country from whose bound no traveling man and woman, no traveler returns. बड़ा इमोशनल था उन्होंने दिया बहुत. And he concluded that death penalty has no rational nexus with any legitimate penological goal or any rational penological purpose. It is arbitrary, irrational, and hence violative of Article 14 and 21 of the Constitution. लेकिन हम जानते हैं कि it's the majority that matters, even in court decisions. It's the majority view that prevails. And Bachchan Singh laid down that doctrine of rarest of rare. तो कौन से केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएंगे और उसमें इनकंसिस्टेंसी क्या है, इस पर हम लोग 15-20 मिनट बात कर लेते हैं, so that we have 5 minutes to take questions as well. So Bachchan Singh observed, the majority of the Bachchan Singh observed that no exhaustive enumeration of aggravating mitigating circumstances, उन्होंने बताया था ना, aggravating mitigating circumstances, blah blah blah. पढ़िए आप, you being a PhD scholar, wannabe PhD scholar, of course, you need not be told only basic things. So you know that how Bachchan Singh wanted the courts, the trial courts, to identify aggravating and mitigating circumstances. उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दें कि ये सर्कमस्टांस एग्रावेटिंग है, ये सर्कमस्टांसेस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, दो दे हैव गिवन सम गाइडेंस. Supreme Court in subsequent cases has also enumerated certain aggravating factors justifying death penalty. For example, Machhi Singh का केस पढ़िएगा. Machhi Singh is a 1983 decision. Machhi Singh and Bachchan Singh, they are discussed in the same breath. एक साथ ही डिस्कस किए जाते हैं. Machhi Singh. It has been held in Machhi Singh that community may entertain such a sentiment that the offender deserves nothing less than death when the crime is viewed from the platform of the motive for or the manner of commission of the crime or the antisocial or abhorrent nature of the crime. For example,
Let me enumerate a few. Manner of commission of murder. Manner, किस तरीके से मर्डर किया? When the murder is committed in extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting, dastardly manner, so as to arouse intense and extreme indignation of the community. हत्यारे ने किस प्रकार से मर्डर किया? एक गोली मार के चला गया, एक जो है वो टुकड़े टुकड़े कर रहा है, मार रहा है, उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर रहा है, मार के उसको जो है, जिसको कहते हैं कि मन नहीं भरा है तो पैर से भी मार रहा है, टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी गोली मारी है. Many cases, I often tell that when you read the facts in several murder cases, you are flabbergasted to see the brutality or the diabolical nature of murder. फिर कुछ बड़े subjective example दे दिए. When the house of the victim is set at flame and the end in view to roast him alive in the house, जिंदा जला दें. उन्होंने कहा डेथ पेनल्टी दो. मच्छी सिंह कह रहा, मच्छी सिंह में सुप्रीम कोर्ट कह रहा. When the victim is subjected to any human act of torture or cruelty in order to bring about his or her death, when the body of the victim is cut into pieces or his body is dismembered in a fiendish manner. Motive for commission of murder, where the murder is committed for a motive which evinces total depravity and meanness. For instance, when hired assassins commit murder. आपने सुपारी killing सुनी होगी. Hired for the sake of money or reward. Cold-blooded murder is committed with a deliberate design in order to inherit property or to gain control over property of a ward or a person under the control of the murderer. होता है. A murder is committed in the course for betrayal of the motherland. Anti-social or socially abhorrent nature of the crime, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज बताए. ब्राइड बर्निंग, डाउरी डेथ 83 में अभी वो आया नहीं था. When murder is committed in order to remarry for the sake of extracting dowry once again or to marry another woman on account of infatuation, उन्होंने कहा कि ये भी aggravating. Magnitude of crime, when the crime is enormous in proportion. For instance, when multiple murders, say of an entire family or a large number of persons of a particular caste, community, locality are committed. Personality of the victim of murder, when the victim of murder is an innocent child, a helpless woman, or a person who is rendered helpless by old age or infirmity, a differently abled person, when the victim is a person vis-a-vis whom the murderer is in a position of dominance or trust, when the victim is a public figure, generally loved and respected by the community. Politicians, say for example. तो बच्चन सिंह ने यह कहा कि circumstances of not only the crime but also of the criminal are important considerations in deciding whether the case falls in the rarest of rare category. आप केवल अपराध की परिस्थितियां मत देखिए, अपराधी की परिस्थितियां भी देखिए. अपराध की मत देखिए, अपराधी की भी देखिए. ये बच्चन सिंह ने कहा था. लेकिन बच्चन सिंह को there is this blot in the Indian legal and constitutional history, which is in the form of this Ravji decision. Ravji versus state of Rajasthan. Ravji alias Ram Chand. Ravji versus Ram versus state of Rajasthan. 96 का decision. Division bench of the Supreme Court held that it is the nature and gravity of crime and not the criminal which are germane. Criminal, उन्होंने कहा criminal का क्या करना है यार. और उसके बाद बहुत सारे केसेस में बच्चन सिंह को ओवरलुक करके, डिसरिगार्ड करके
राव जी को फॉलो करते हुए डेथ पेनल्टी दे दी गई बहुत सारे केसेस में। एंड दिस was highlighted in another 2010 decision, Santosh Kumar Bariyar case. Santosh Kumar Bariyar versus State of Maharashtra is a 2010 decision. In Santosh Kumar Bariyar versus State of Maharashtra, the Supreme Court division bench was of this view that death penalty awarded by relying on Raoji has been wrongly awarded. Raoji is per incurium. Per incurium का मतलब कि a decision that is rendered or delivered in ignorance of law. बरियार केस आप पढ़िए, बरियार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 13 convicts in murder cases were given death penalty by the different benches of the Supreme Court between 2003 to 2009 in flagrant disregard to the rarest of rare doctrine. And the cases identified in the Bariyar case, which were wrongly decided, included दयानिधि बिसोई केस 2003 का है, मोहन अन्ना चवाड़ केस 2008 का है, बहुत सारे केसेस। अंकुश मारुति शिंदे है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2009 का। तो ये किसी को पता ही नहीं कि कौन से केसेस जो हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएंगे, कौन से केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आएंगे। It is certainly not known that what cases shall fall in the category of rarest of rare till it is so decided with the Supreme Court in the period from 2000 to 2015, even today. A survey of cases decided by the Supreme Court on the question of death penalty only highlighted that there are great inconsistencies in the approach of the court. और ये सर्वे किया था डेथ पेनल्टी इंडिया प्रोजेक्ट एक चल रहा है, अब उसको आर्टिकल 29A कहते हैं, प्रोजेक्ट आर्टिकल 29A 39A, आई एम सॉरी, आर्टिकल 39A of NLU Delhi, where they have studied death penalty cases pan India, and they have come to a conclusion. Even before that, the Amnesty International that studied death penalty awarded by the courts in this country from 1950 to 2008 and titled its report as Death Penalty a Lethal Lottery. Lottery. A lethal lottery. Death penalty is a lethal, खतरनाक lottery. तो आप पाएंगे कि death penalty, though there and the number of provisions is only increasing, and even in 2019 the Supreme Court refused to entertain another petition that sought to challenge the constitutional validity of death penalty on the ground that the constitutional validity has already been laid down and decided. In Bachchan Singh case, you would find that certain benches and certain individual judges are on a constant look for alternative, a better alternative to death penalty. बेटर अल्टरनेटिव आप कहेंगे, बेटर अल्टरनेटिव तो पहले से है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें मैं बहुत जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि इन स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1, जैसे एक ही टाइटल के कई केसेस होते हैं, जैसे शीला बार से 1, 2, 3, हुसैन आरा खातून 1, 2, 3, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्रिमिनोलॉजी फिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये केसेस आप जानते होंगे, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स दिस एंड दैट। ऐसे ही
एक डिवीजन बेंच का डिसीजन है, स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. द डिवीजन बेंच वाज ऑफ जस्टिस एस बी सिन्हा एंड जस्टिस मार्कंडे काटजू. फैक्ट्स वर दैट स्वामी श्रद्धानंद, वो उनका असली नाम नहीं था, दैट वाज एन अज्यूम्ड नेम. ही वाज सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन. आजकल जैसा कि बहुत सारा आपने सुना है. तो ही married a woman who was already married with a diplomat, convincing her. अब देखिए ये भी बड़ा जिसको कहते हैं कि एक अजीबोगरीब सा केस है. उसकी एक बेटी थी और वो एक रॉयल फैमिली से आती थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पीली settled in her married life, and she would be living abroad for many months and years, but would come to India to look after her property and all. तो किसी तरीके से मुलाकात हुई स्वामी श्रद्धानंद मिश्रा जी से, जो इनका नाम था. और मिश्रा जी ने बताया कि मैं ज्योतिषी हूं और आपके भाग्य में एक बेटा भी है. अब ये बेटे की चाह में और इनके बरगलाने में इन्होंने अपने पति को तलाक दिया और मिश्रा जी से शादी करी. स्वामी श्रद्धानंद जी इन्होंने अपना नाम रखा था. मिश्रा जी को शादी करनी थी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और कुछ दिनों तक ये रहे साथ में, हंसी खुशी जिसको कहते हैं. और एक दिन स्वामी श्रद्धानंद ने ये कहा, जैसा कि आमतौर पर एक doting husband कहता है, कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ. एंड ही प्रिपेयर्ड कॉफी फॉर दिस लेडी victim, unfortunate victim, and mixed lethal poison that would cause instant death in the coffee. और कॉफी दिया, खुद पिया, उसमें जहर नहीं था, जाहिर सी बात है. and she died instantly, and he buried the body in the backyard and then spread this false information news that she has left me. अब लोगों को विश्वास हो गया कि जो महिला अपने पति को छोड़ करके और बेटी को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी और शादी कर ली है, वो शायद इसको भी छोड़ के चली गई होगी. For several years the matter was not sort of treated as a crime of murder, but it so happened that some tip off, some other investigation led to suspicion on स्वामी श्रद्धानंद. तो श्रद्धानंद जी का प्रोसिक्यूशन हुआ और श्रद्धानंद को सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई. दैट वाज कंफर्म्ड एंड ही अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द अपील वाज हर्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस. अब जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा फांसी और जस्टिस एस बी सिन्हा ने कहा फांसी नहीं. जस्टिस मार्कंडे काटजू कह रहे हैं कि मर्डर तो किया है, इट्स 302, नो डाउट. दोनों जजेस कह रहे हैं मर्डर है, बट दे डिफर्ड ऑन द क्वांटम पनिशमेंट. जस्टिस मार्कंडे काटजू के लिए ये फांसी थी, फांसी का केस था. जस्टिस एस पी सिन्हा के लिए फांसी का केस नहीं था. तो ऐसे मामले में आप जानते हैं कि न्यू बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 जजेस. द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर 3 जजेस बेंच और वो डिसीजन ही पढ़ा जाता है. Swami Shraddhanand 2 versus State of Karnataka. It's a 2008 decision. I may even tell you the citation of that case. It's AIR 2008 Supreme Court 3040. तो आप पढ़िएगा. The bench was of Justice B.N. Agarwal, Justice G.S. Singhvi and Justice Aftab Alam. And all the 3 judges agreed with the view that was taken by Justice S.B. Sinha. But what they said is that in such cases which falls just short of rarest of, ये हत्या तो दंडनीय है और क्षम्य नहीं है, लेकिन क्या मृत्यु दंड ही उचित दंड होगा, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले में मृत्यु दंड उचित दंड नहीं है और हम जो है वो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देते हैं, विच वुड मीन द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ स्पैन. तो स्वामी श्रद्धानंद जो है वो जेल के अंदर हैं और अब वो तभी बाहर आएंगे
जब उनकी मृत्यु हो जाएगी वो नहीं बाहर आएंगे, उनका शरीर बाहर आएगा। एंड दैट स्टार्टेड न्यू ट्रेंड इन सर्च ऑफ मोर वायबल अल्टरनेटिव एज फार एज डेथ पेनल्टी इज कंसर्न। और बाद में 2016 में आपको पता है कि वी श्रीहरन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल भी ठहरा दिया था। तो इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेथ पेनल्टी को लेकर के भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अभी भी एक जो है वो उथल पुथल की स्थिति है। और बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जहां पर आपको ये लगेगा कि शायद इसमें डेथ पेनल्टी न दी जाती, लेकिन डेथ पेनल्टी दी गई है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको लगेगा कि डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए थी और न्यायालय ने डेथ पेनल्टी नहीं दी है। कुछ नियम भी रहे, अलिखित नियम रहे, जिनको रूल ऑफ प्रूडेंस भी कह सकते हैं। जैसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस यदि हैं, केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, तो बहुत सारे मामलों में ऐसा है जहां पर न्यायालय ने ये कहा कि हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे और नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन फिर कई ऐसे मामले हैं जहां पर न्यायालय ने ये कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जो केस सिद्ध किए गए हैं उसमें डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन आई, वैसे ही एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडुअल डाउट एक आया, अमेरिकन डॉक्ट्रिन है। बहुत दिनों तक भारतीय न्यायालयों ने, विशेष तौर पर उच्चतम न्यायालय की कुछ बेंचेस ने, इस डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडुअल डाउट को आधार बनाते हुए जो है वो डेथ पेनल्टी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि ये भी कहा गया कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडुअल डाउट इज इनसेन डॉक्ट्रिन और इनसेन प्रोपोजिशन एंड हैज नो प्लेस इन आवर जूरिस्प्रूडेंस। तो मुझे लगता है कि डेथ पेनल्टी को लेकर के आपको अपने मस्तिष्क को इमोशंस से परे रख करके और जो घट रहा है और जिस रूप में घट रहा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये जान लेना कि किन अपराधों के लिए डेथ पेनल्टी है और किन अपराधों के लिए अभी पिछले 2-3 वर्षों में डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई है ही सफिशिएंट नहीं है। So if you have a question or if you want me to clarify on some point, you may raise your hand. As I told that I'll be leaving in 2-3 minutes time, 5 minutes before the scheduled end of this class. Yeah. We have another class. तो हम लोगों का एक क्लास और होगा probably in the first week of March, but that's on a different topic altogether. But I would be happy to take your questions on all the two other sort of topics that are discussed with you in the last classes. So I'm done. Yes, sir. बताएं। यस मनोश्री मैम, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। Unmute yourself and you just. Sir, may I audible? यस। Hello. बोलिए। हेलो। बोलिए, आप बोलिए। सर, एक्चुअली जैसे आपने अभी कंक्लूड कर दिया कि ये जो डिस्कशन हो जा रहा है, फिर सर कोर्ट का जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन था, इसका तो सर कोई मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल मतलब अभी नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। और जैसे सर ये निथारी कांड था, तो उसमें सर सुरेन कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ही वाज कवर्ड अंडर एग्रावेटिंग फैक्टर्स।
but he was given life imprisonment. तो सर इसका तो हम कभी सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे नहीं, ऐसे। तो आपको मैंने बताया ना कि एग्रावेटिंग ही तो केवल एक आधार नहीं है, एग्रावेटिंग तो के सर साथ साथ जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी हैं। और देखिए आप, मैं यही बात तो कह रहा हूं कि देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जी संगीत का एक मामला है, संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012-13 का। संगीत में उन्होंने कहा कि हम डेथ पेनल्टी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंडिया में डेथ पेनल्टी देने की कोई एक कंसिस्टेंट जो है वो प्रिंसिपल हम जो है वो इवॉल्व नहीं कर पाए। तो in absence of such a concrete principle, it's unsafe to award death penalty. जी और निश्चित तौर पर अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग जो है वो, बच्चन सिंह पर चर्चा करके हम जो है वो समझते हैं कि डेथ पेनल्टी पर डिस्कशन पूरा हो गया। बच्चन सिंह के जी बाद बहुत सारे केस हैं, आप राव जी पढ़िए, राव जी वॉज जी पर इंक्यूरियम। आप संतोष कुमार बरियार पढ़िए, आप उन जी डिसीजंस को पढ़िए जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडुअल डाउट को हाईलाइट किया, रिलाई किया। उसके बाद के डिसीजन है जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडुअल डाउट हैज नो प्लेस इन आवर जूरिस्प्रूडेंस, और उसके कारण वो दे रहे हैं। मेरे पास बहुत समय नहीं है कि मैं उन कारणों जी पर बहुत चर्चा करूं। तो आप बिल्कुल सही हैं, और मैं इसी बिंदु पर कंक्लूड करूंगा कि जी देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इनकंसिस्टेंसी and sort of the no concrete principles that guide the Indian courts as far as awarding of death penalty is concerned. Even the criteria of rarest of rare, aggravating, mitigating circumstances, uh, circumstances of crime, circumstances of criminal, all these have become sort of very problematic in many cases. जी So, यही है। थैंक यू सर। मयूरी जी, आई Thank एम you. डन ना, चलिए खत्म करते हैं। Thank you very much, sir. Okay, guys, thank you very much. CS Shubham भैया, recording off कर दीजिए।